Hey, what's up you lovely people? Welcome back to the channel everyone. I hope you're doing absolutely fine. अभी आज एक्चुअली संडे है तो संडे इज़ अ डे फॉर कंप्लीट रेस्ट. तो मैं सुबह से बैठ के रेस्ट ही ले रहा था. एंड आई वाज थिंकिंग मैंने एक चीज़ ऑर्डर किया है, वो चीज़ मेरे पास कब आएगा बोल के. बिकॉज आई वॉज एंक्शियसली वेटिंग फॉर दिस वन फॉर द मटेरियल टू कम. बिकॉज मैं एक लंबा राइड का प्लान. Now talking about 1000 kilometer ride, yes my dear friend, I'm planning for a 1000 kilometer ride very soon. For that reason I have ordered something from AliExpress and I got it delivered today. ये क्या चीज़ है I'll show you. Unboxing कर लेते. Now this is a complete riding pant from the brand called Komini. The Komini brand is from Japan. It's an international brand. और मैंने ये पैंट ऑर्डर किया था एंड आई हैव गॉट इट डिलीवर्ड टुडे आली एक्सप्रेस आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव वीक्स ऑफ फॉलो अप. मैंने बहुत फॉलो अप किया. फाइनली आई गॉट फेड अप. नाउ लेट्स डू अ क्विक रिव्यू ऑफ दिस पैंट. So doing a quick review of this pant here, ये pant is a completely 100% waterproof as this brand claims, and the brand is called Komini, and it is also written as a waterproof over here. And सबसे अच्छा चीज़ है you get a knee pad over here. knee pad already अंदर से pad दिया हुआ. It's very hard and over and above external if you are paying around 800 rupees extra. आप अगर if you're very keen in sliding your bike and doing that stunts, then this pant is the perfect pant. इस पे आप ये लगा सकते हो because this has got this rough material जिस पे आप you can stick that extra additional knee cups सेफ्टी. यहाँ पे एक जिप मिलता है आपको. ये जिप आप ओपन कर सकते हो व्हेन यू आर वेयरिंग अ बूट. तो बूट के ऊपर से आप डाल के जिप बंद कर दो एंड योर बूट इज ऑल्सो सेफ, वाटरप्रूफ, कंप्लीट वाटरप्रूफ. एट योर बैक यू हैव दिस. ये पीछे का यहाँ पे इट्स ऑल सॉलिड हार्ड पैड्स ओवर हियर. सो दिस टेक्स केयर ऑफ योर सेफ्टी नॉर्म्स. एंड या दिस इज द टैग Komini. And this one I've taken an extra large because extra large मेरे को पहनना था because I didn't want to be a very loose fit and all. And yeah, this is the brand, original brand by Komini from Japan. Now what I'll do is that I'll wear this pant and I'll show you. That will be a better way to explain how is the pant. There's a reason that I like you, that I write you all these love songs. That when I close my eyes, I get lonely when I can't take my hand and reach you to remember how I found you. When you're here, I'm stronger than I am, and I keep writing music. Sometimes it makes me happy, sometimes it makes me mad, but I haven't lost it yet. I feel it in my face, yeah. तो ये पैंट को हम फटाफट पहन लेते हैं. This is actually a perfect fit for me. So isn't this a perfect fit? ये देखिए. Now I'll show you. Okay. Now this pant after wearing is something like this. I'm sorry if my gestures are bad because I'm showing the pant. So you have got a pocket over here, you have got a pocket over here. So these two pockets you can keep your wallet and all अगर आप लंबा राइड पे जा रहे हो. But anyhow we don't keep wallets, we keep direct purse. And there are two pads over here. एक knee pad है यहाँ पे, एक knee pad यहाँ पे है. And as I said यहाँ पे आप externally एक knee pad लगा सकते हो. This is a completely waterproof. पीछे hip portion में you have got support पूरा. You have got pads over here and this is very flexible. So whenever you are lifting your leg, yes you can do it. You can stretch, whatnot you can do it.
So yeah, that's it. And okay, let's discuss something about riding. Now, I wanted to share a bit of my experience when I drive, when I ride. I have driven almost around 27 hours constantly, 27 hours, around 1,300, 1,400 for 1,400 kilometers. My last drive was almost around the last year, which I did from Bangalore to Gujarat. I did Surat, Bangalore non-stop. So Surat, Bangalore non-stop in the sense without a rest, loo breaks and food breaks, obviously it's important. So I've done it. How do I do it? So how do you prepare yourself for a bigger ride, for a bigger drive? So what I do is that फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रेस्ट. आप कभी भी अगर लंबा ड्राइव पे जा रहे हो, बिफोर प्रायर टू दैट यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रेस्ट. मोस्ट ऑफ माई ड्राइव्स और माई राइड्स अनफॉर्चुनेटली मैं उतना लंबा रेस्ट ले नहीं पाता बिकॉज माई वर्क स्टाइल डजेंट परमिट मी. तो मैं क्या करता हूँ, जनरली आई ड्रिंक रेड बुल, विच इज़ नॉट एडवाइजेबल ऑब्वियसली, बट एक आध रेड बुल आप पी सकते हो, नॉट ओकेशनली, नॉट एवरी डे. और यू नीड टू हैव अ प्रॉपर रेस्ट बिफोर यू गो फॉर अ लॉन्ग ड्राइव. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लान योर वे. Now the first and foremost thing what I do, I'll only say about what I do is that मैं क्या करता हूँ, मैं हमेशा I chalk out a plan. For example, मैं यहाँ से मुंबई जा रहा हूँ which is 1000 kilometer. So I know where to give a halt, where to give a pit stop. मैं क्या करूँगा on the way, मैं यहाँ से क्या क्या चीज़ अपने साथ कैरी करके लेके जाऊँगा so that I need not stop so frequently and lose the sequence of the drive or the ride. मैं क्या करता हूँ, आई डेफिनेटली कैरी वाटर बॉटल्स विथ मी, सो मुझे ज़्यादा रुकने का ज़रूरत नहीं पड़ता. वेर एवर आई स्टॉप मैं फटाफट पानी पीता हूँ. मैं कभी कभी तो रुकता भी नहीं हूँ, तो ऑन द गो आई ड्रिंक एंड कीप गोइंग. सूरत Bangalore I did in complete around 22 hours. I did Mumbai Bangalore 16 hours. So these actually slowly आपको enhance, you should do the enhancement slowly. आप अगर नया राइडर हो, नया ड्राइवर हो, पहले ही आप टारगेट मत करो 1000 किलोमीटर, पहले टारगेट करो फॉर 100-200 किलोमीटर नॉन स्टॉप जाने का, जाके वापस आना. स्लोली इंक्रीज योर लिमिट्स, but do not take it as a advice. This is not advice, this is I shared what I do. So anyway guys, I hope you like this video. If you like this video, please don't forget to give this video a like. अगर नया हो तो please subscribe कर लो, because I do make a lot of good videos every week. So until then, Raj signing off. Do take care. God bless you. Bye bye. I'll see you soon, maybe in a day or two. Yes guys, I'm traveling to Trivandrum. कल सुबह मैं निकल रहा हूँ, and I'll see you on the move. Bye bye. Good night.